Thank you, Dr. Vikas. Thank you for taking out time from your schedule and joining us here amidst your very busy schedule. So, coming to the most important question, because when we talk about antibiotics, I would first come to the basic question that what are antibiotics and why do our body needs them? You know, what is the impact during any infection? What is the role that they play in fighting that infection? Yeah, so first of all, thanks for inviting me here. And antibiotics are one of the most important medicines that mankind has got before 1928, when penicillin was actually invented by claiming. A lot of people used to die for simple infections. Like many soldiers used to die of wound infection on the battlefield, and even simple infections like diarrhea and a respiratory illness would kill a person, and therefore the expectancy was very less, not even 40 to 50 years across the globe. And when penicillin was developed or invented, the life expectancy went very high because the simple infections could be controlled. So bacteria are very common organisms which can develop into any of our body systems. And generally, if the bacteria is of a very low virulence, the system can fight with it. But high virulence bacteria, the system many times cannot fight. And if somebody has an immune system which is not so strong, then it is very important to kill that bacteria. So antibiotics are the medicines which kill bacteria which is inside our system. And therefore, if we are struggling with some infection, like say pneumonia, like sinusitis, like tonsillitis, like gastro infection or something, then if the body is unable to fight with that infection, then it is vital that antibiotics, are taken for a period of time so that the bacteria can be killed and the our body can come out of it. So it's a very important thing, but it has to be used in proper manner. Judicious use is important. That is something that I will come to in the later part of the discussion. But since you talked about sinus or common cold even, so in India we have a lot of myths, and when we talk about simple cold, we have seen people taking over the counter drugs for even if it is not a bacterial infection. So can is Correct. there a difference between the two? How can somebody who is suffering from this kind of health infection, how can he differentiate between what is the infection, what are the symptoms, what should he go for, what are those things that they should keep in mind? Yeah. So what is common cold, in other words, which will go away by itself, or what is a bacterial infection versus what is allergy? So all these things are quite mixed. So I'll try to demystify by giving a very simple understanding into the whole things. If somebody gets cold, if he has body ache, fever, runny nose, uh, once in a while, say once in 3 4 months with change of weather, we call it a simple viral common cold. And by and large, it has to go away within a week's time. So we say whether if you treat it, it will go in a week. If you do not treat it, it will go in 7 days. Right. So typically the body fights with the virus and it takes care of itself. That's common cold. In that, generally you will have a runny nose, may have body pain, body fever, uh, uh, itching in the throat, some burning sensation here and there. So only supportive medication, like if you have fever, you can take some paracetamol. If you have some throat irritation, you can have some gargles and maybe have some antihistamines for the runny nose. It should go away by itself. That's common cold. There's something called sinusitis or pharyngitis when there is a bacterial infection. So if this common cold is superseded by bacteria, or if it is only started with a bacterial infection, then generally you will have high fever, you'll have severe pain in the throat. May not be associated with this body ache and all. It all depends on where you have the infection, but generally the kind of runny nose and the high fever with body pain generally does not happen in bacterial infection. It's mostly a severe throat pain. You may have your tonsils swollen. You may have you may find it very difficult to eat and swallow, and the pain is localized.
right? It's not spread throughout the body. Then generally that is a bacterial infection of the throat. If you have sinusitis, you may have headache, may have discharge which is yellow and green. This is bacterial infection. In these cases, you would require antibiotics, because if you do not treat it properly with antibiotics, then it may prolong and get converted into chronic sinusitis, which might need surgery, or tonsillitis, which may become very, very severe and which may require surgery. The third thing is allergy. If somebody has a recurrent sneezing, watering, but without fever, without too much of body pain, without severe pain in the throat, then that is generally allergic rhinitis or allergic pharyngitis. Again, that's very common. So, common cold, bacterial infection, and allergy. These are the three things that have to be, kept in mind. In general terms, I have tried to explain the difference between these two, three things. So if somebody has a proper infection, then he requires antibiotics. Common cold generally would go away by itself, and you need not visit doctors. You can just take some paracetamol or over-the-counter, cough and cold medicines if at all required. And if it is allergy, then obviously it's a totally different ballgame together. You have to take proper treatment for allergy. Right, Dr. Vikas. Very pertinently, you have, discussed about the early signs and symptoms, which may help an individual to, identify things at an early stage. When we talk about, visiting the doctor, for your prescriptions, medicines, many a times people are not able to, give an account of their symptoms as such to the doctor. You think this is one of the major reason why, and even we Indians are a bit hesitant when it comes to visiting your healthcare provider, and they prefer, अरे दवा से pharmacy से जाके एक ये वाली दवा ले लो. So do you think, is this the right approach? I mean, what advice would you give to such people? Very important thing you have touched upon. So, see, first of all, the callousness in the approach towards our health is not something which is welcome. You just go to a pharmacy and ask the person, "अरे मुझे बुखार हो रही है, कुछ दवाई दे दो या सर्दी हो रही है." The guy sitting on the counter, he had hardly any knowledge of your disease. He's not a doctor, first of all. So what will he do? He will give you a cocktail. He'll give you a painkiller. He will give you antihistamine. He'll give you antibiotic, because he still has to, you know, get you back on toes. Because that, so this approach is first of all not correct. We should not be, making the pharmacist a doctor. He's a pharmacist. His job is not to prescribe medicine. His job is to dispense medicines. Second problem happens when you go to your family doctor. Now, everybody in our country is in a rush. So you get 1 day fever. Now you rush to your family doctor and you say that I cannot take off. I have to go to work. You get me right by tomorrow. Now this is not the. I understand that people are in rush, and Bombay is a maximum city. Everybody is working and people cannot take off. I understand that. But the disease does not understand that. Your body has a mechanism. If you get hurt, see, if you get hurt on your hand, how long it takes to heal? At least 3 to 4 days. This is the minimum. If you get hurt, it will get swollen. And within 3 to 4 days, the swelling will come down, and within a week, it will completely subside. That's normal healing process. You need not, do anything to modify it. So similarly, if you have got a, say, viral infection or a basic infection, you should not pressurize your family doctor or your healthcare provider. I need to get well by tomorrow. What option he has? He has to prescribe you strong antibiotics, strong medicines, which are all not good to health. Then, if he says that let's do your blood test to understand what problem are you facing, which disease are you having? Is it a viral infection which will show that your lymphocyte count is high, or it is a bacterial infection which will show your neutrophils to be high? So again, people are not in a mood to get investigated. No, no, doctor, हमको कोई दवाई दे दीजिए, बस हमको ठीक कर दीजिए, बाद में देखेंगे, नहीं ठीक होगा तो देखेंगे. So this again approach is not correct. So first of all, the healthcare provider or the doctor should not be pressurized to give immediate result. Otherwise, he will be forced to prescribe you strong medication which are not required. The body has to take its time to heal.
Second is that if investigations are required, then they have to be done. राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर आपको समझिए, आपको लगता है कि आपको नॉर्मल सर्दी खांसी है, तो आपको, you need not go to your doctor. You can treat it yourself by taking paracetamol and antihistamines that you can very well take over the counter. This is absolutely fine. Wait for a few days. If there are no red flags, then you problem. If there's a complication, then you go to your doctor. Then do not pressurize him. Let him investigate if required, and let him prescribe the medicines. He would say that, okay, this looks like a viral. You take these medicines for 3 days. If it does not subside, then you come back. Then he will not prescribe you very strong antibiotics and medicines. So these are the two things I would say, that first of all, do not, just make your pharmacist your doctor. Choose your doctor judiciously when you require it. After, if you think that red flags, there's something serious, then you go to your doctor, and then don't pressurize him. Then, and follow the prescription, follow the investigations that he's asking, and then possibly you will get your best result in the long run. Right, Dr. Vikas. Very rightly have pointed out that we need to trust the doctor instead of pressurizing him to, to get us a stronger dose or to get us back on our feet. So when we talk about antibiotics, so there is this, many people, like if it's a 3 day, 1 week course, they would say, "Arey, 2 दिन में I started feeling better, so I, discontinued the course." So why is it important to continue the whole course? And if you do not do, what is the health implication that incomplete dosage can do to you? Please enlighten us on that. You absolutely picked up the right chord, because अपने देश में ये बहुत बड़ी समस्या है कि people go only for acute medicine treatment. There is a problem now, and this problem is faced by the family doctors the most. Many of my friends who are into family practice, they say that, like you said, people are not willing to take medicines for more than 2 or 3 days. What happens if you have an infection and you start with antibiotics? Within 2 to 3 days, the infection would settle down to an extent that they will not feel it. बट फिर भी अंदर तो वो इन्फेक्शन अभी भी चल रहा है ना। तो अगर किसी मेडिसिन का कोर्स अगर 7 दिन का है, and you try to finish it within 3 days, so your problem is half treated, not full treated. So उसकी दो इश्यूज हो सकते हैं कि हाफ ट्रीटमेंट से, अब आपने आधे में अगर दवाइयां बंद कर दी, तो बॉडी में जो बैक्टीरिया आधे मरे थे, एक तो वो वापस से जिंदा हो सकता है. So then you have come down by half, then you can again get the same thing again, and then you will think, the medicine has not worked, or the doctor has not given the proper treatment. It's because you have not taken the complete dose. So the bacteria is not completely killed. If it is not completely killed, हम क्या कहते हैं, सांप को अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए, दैट अपनी कहावत है ना हिंदी में, अधमरा सांप ज्यादा डेंजरस होता है. नाउ दिस बैक्टीरिया इज हाफ किल्ड, सो इट विल कम विथ वेनेगेंस. इट विल, ये जब ये दोबारा आएगा, तो अब ये सेम दवाई इस पे काम नहीं करेगी. इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. तो अभी आपने 3 दिन दवा ली, फिर छोड़ दिया, तो 2-3 दिन ठीक रहा, वापस से जब शुरुआत हुई तो आपने वापस से दवाई शुरू की. अब ये दवाई इसके ऊपर वापस काम नहीं करेगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया से लड़ना सीख गया. दैट्स कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, because it is half killed. Either you do not kill, let the body kill it, or if you are using antibiotic, use it completely and kill the bacteria once for all. अगर ये पूरा मर जाएगा तो दोबारा से नहीं उठेगा, लेकिन अगर आप इसको आधा मार कर छोड़ देते हैं, ये दोबारा से खड़ा हो जाता है. तो एक तो ये बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में है, इसने इस दवाई के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया. अब ये इस दवाई से ठीक नहीं होगा, तो आपको और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, जो आपके शरीर पे भी ज्यादा नुकसान करेगी. दूसरा ये कि नेक्स्ट टाइम आपको ये इन्फेक्शन होगा, तो अब स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक भी शायद काम नहीं करेंगे, तो फिर आपको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे. तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये बैक्टीरिया अब आपके बॉडी सिक्रीशंस के थ्रू, जो ये बैक्टीरिया तो काफी स्ट्रांग बन चुका है इस दवाई से, और बड़ी दवाइयों से रेजिस्टेंट हो चुका है. अब ये आपके बॉडी सिक्रीशंस के थ्रू किसी दूसरे तक पहुंचेगा. आपने छींका और ये किसी और तक चला गया, या आपके यूरिन से इधर उधर फैल गया, या आपके बॉडी स्वेट से फैल गया. तो ये बैक्टीरिया जहां भी जाएगा, ये जिसके अंदर भी जाएगा, ये उसमें भी ये बेसिक दवाइयों से अब ठीक नहीं होगा, तो ये पूरी कम्युनिटी में रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम पैदा होगी. सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉक्टर्स टू प्रिस्क्राइब ए कंप्लीट कोर्स, फॉर पेशेंट्स टू टेक ए कंप्लीट कोर्स,
बिकॉज न कि सिर्फ वो खुद परेशान होंगे, बट उनके घर वाले, उनके आसपास वाले, उनकी सारी कम्युनिटी इससे अफेक्ट होएगी। तो एक तो इससे बॉडी में रेजिस्टेंस होगा, आपको अगली बार स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लगेंगी, उसके अगली बार शायद इंजेक्शन लगेंगे, एडमिट होना पड़ेगा। उसके अलावा आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली और जो आपके नियर एंड डियर वन है, उनको जब ये बैक्टीरिया लगेगा आपसे, तो उनके ऊपर भी वही बात लागू होगी, ये बैक्टीरिया और स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो आपने पॉइंट उठाया बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसलिए कभी भी एंटीबायोटिक्स का अंडर यूज, यानी कि अगर आपको डोज है 500 मिलीग्राम, अरे डॉक्टर तो 500 मिलीग्राम लिखते हैं, बहुत हैवी है, हम तो आधी लेंगे, 250 लें। अंडर यूज नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ डोज, अंडर यूज नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि अगर 7 दिन का कोर्स है तो 7 दिन ही लेना है, उसको 3 दिन 5 दिन में बंद नहीं करना है। आप अच्छे हो गए तो भी बंद नहीं करना है। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स योर फैमिली। और ऐप यूज नहीं करना है कि अच्छा पिछली बार डॉक्टर ने दिया था तो मुझे लगता है वही प्रॉब्लम मैं खुद से खा लूं, वो भी नहीं करना, बिकॉज यू आर नॉट अ डॉक्टर। जो आपके डॉक्टर जिन पे आपको भरोसा है, आप उनसे वापस से मिलिए, ये प्रॉब्लम है, ये दवा सही है क्या, और फिर वो जितनी डोज में बोलते हैं उसको आप लीजिए। Right, Dr. Vikas, very rightly you have pointed out. One of the main issue that we see amongst patients is कि अरे antibiotic लेने से like why do they discontinue the course? कि थोड़ा weakness हो रहा था, you know, body में. So are there some diet or even lifestyle interventions that are necessary? Like you said कि body को भी rest चाहिए. I've seen, you know, people taking those medicines, going to work, not give proper rest to the body. खाना पीना diet is not taken being taken care of. So what are some of the lifestyle interventions that can help, you know, along with these doses of antibiotics in better recovery of patients? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज सी एंटीबायोटिक है क्या, ये अल्टीमेटली जहर है। बहुत छोटी मात्रा में जहर है, बिकॉज ये बैक्टीरिया जो आपके अंदर है, उसको मारेगा, लेकिन है तो जहर। तो आपके बॉडी में कुछ तो साइड इफेक्ट होंगे। तो जो हम पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया, जो बीमारी करने वाले बैक्टीरिया के लिए दवाई देते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया हमारे गट हैं, जो हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं, हमारे लार्ज बाउल में होते हैं, ये उनको भी किल करते हैं साथ में। तो उसके कारण लूज मोशन होना, थोड़ी वीकनेस होना, थोड़ा अनईजी फील होना, ये नॉर्मल है। तो जनरली आपके डॉक्टर आपको प्रोबायोटिक भी साथ में ही प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अगर प्रोबायोटिक नहीं भी प्रिस्क्राइब है, तो आप समझिए, अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, जैसे मॉक्सिसिलिन एक दवा है, काफ़ी कॉमनली यूज होती है, उससे लूज मोशन कॉमन है, लेकिन सारे सर्दी और साइनस के लिए, टॉन्सिल्स के लिए वही सबसे कॉमन दवा है। तो आप उसके साथ प्रोबायोटिक के रूप में आपसे दही का यूज कर सकते हैं, सिंपल। और या तो आजकल अमूल का प्रोबायोटिक आता है, या और भी कंपनियों के प्रोबायोटिक आते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो इससे आपको वो दवा का कोर्स कंप्लीट करने में मदद मिलेगी, बिना डायरिया और बिना परेशान हुए। दूसरा ये है कि जब आप एक छोटे डोज में अगर जहर ले रहे हैं, तो आपको नेचुरली बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। आप अगर बहुत काम करते जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा, सबके लिए काम करना इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर आप एंटीबायोटिक के साथ अपना काम कर सकते हैं, बट आपको टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, अगर 8 घंटे की नींद चाहिए, तो वो सब कुछ जरूरी है बॉडी को हील करने के लिए। क्योंकि सिर्फ दवा लेने से बॉडी हील नहीं होती। हीलिंग ओनली हैपेंस बाय रेस्ट, एड इट टू हेल्प इट। सो लाइक यू सेड कि सबको लाइफस्टाइल अपना मॉडिफाई करना जरूरी है, कि भाई अगर आप बीमार हैं और आपके लिए काम करना निहायत ही जरूरी नहीं, तो प्लीज आप 3 दिन घर पे रेस्ट करिए। अगर आपको जाना बिल्कुल ही जरूरी है, तो जितना बिल्कुल जरूरी है उतना ही भर काम करिए। उसके अलावा आप अपने तन को और मन को दोनों को आराम दीजिए। आप टेंशन में मत लीजिए, अरे मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्या होने वाला है अल्टीमेटली, जिंदगी भर काम ही करना है ना। सो और आप अगर आप काम में अच्छे हैं, तो कोई आपको नौकरी से निकालने वाला नहीं है। अगर आप बीमार हैं, तो हर कोई आपका, हमारे अंडर भी इतने स्टाफ काम करते हैं, हम समझते हैं कि भाई बीमार है तो उसको छुट्टी देते हैं, जितना जरूरी उतना ही। बोलते हैं ठीक है, जितना कर सकते हो उतना वर्क फ्रॉम होम कर लो, चलो आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया। सो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि हमको उसको समझना और ट्रीट करना बहुत जरूरी है। Right, Dr. Vikas. Can you hear us? Yes. So that indeed was, you know, a very good answer where you talked about how, you know, that the whole lifestyle shift is important, especially if we talk about, you know,
बिकॉज आई हैव सीन मेनी मदर्स कंप्लेनिंग, अरे इसकी हाइट छोटी रह गई क्योंकि इसने बचपन में बहुत बीमार होता था, ही हैज टेकन अ लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स. So, especially when you are administering doses to small children who are in their, growing stage, what are some of the, concerns which you have seen, parents facing, and how can they overcome those problems? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि छोटे बच्चों में रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है. छोटे बच्चे, अगर हम कहें 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक के बच्चों में ज्यादातर इन्फेक्शन इतने होते नहीं कि उनको बहुत एंटीबायोटिक की जरूरत है. तो सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है? सर्दी खांसी होती है. तो बच्चों में एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है. उनके एडिनॉइड्स बड़े होते हैं जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाते हैं, उनको बार बार सर्दी होती है. तो वैसे केसेस में एडनॉइड टॉन्सिल्स अगर इनलार्ज हैं, नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है, अगर कोई साइनस इशू है, तो उसको प्रॉपर डायग्नोज करके ठीक करना इंपॉर्टेंट है. सिर्फ एंटीबायोटिक देना उसका सोल्यूशन है ही नहीं. Right? So that's very, very important to understand that all those kids who are suffering with recurrent cough and cold may not be having bacterial infection again and again, may not be having viral infection again and again. They may be having adenoid or tonsil enlargement, which is leading to these issues. So पहले तो वो देखना इंपॉर्टेंट है. और अगर किसी को जरूरत पड़ रही है तो उसको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि उसको ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक इस तरह से दी जाए जिसका कि ज्यादा साइड इफेक्ट ना हो. तो छोटे बच्चों में स्पेशली दी डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक ऑल्सो हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड सेंसिबल कि एंटीबायोटिक्स जहां तक हो वो कम से कम प्रिस्क्राइब करें. जो को प्रिस्क्रिप्शन है उसको पे ऊपर पूरा ध्यान दें. और ये देखें कि हम अननेसेसरी लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स पे बच्चे को रख नहीं रहे. विकास, कमिंग टू, अगर हम देखें किस तरह से एक ये एंटी माइक्रोबियल का जो पूरा प्रॉब्लम है, what are you thinking in the longer run, if we talk about the long term impact of such resistance, what are some of the problems that we can see in future owing to the overuse of these medicines? किस तरह से ये हमारे, not on an individual level but yeah at a more broader बिल्कुल. level, what are the changes that we can see? Now this is a question of great significance, Dr. Bajaj, because आप देख 1928 से 100 साल भी नहीं हुए हैं एंटीबायोटिक्स को आए हुए और ऑलरेडी इतना रेजिस्टेंस है. ट्यूबरक्लोसिस के लिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस आ चुका है और दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं करता है. Last part of the question, because I think आपने जैसे बात अभी खुद भी की कि how we need to go back to how everything is moving in circles, और आने वाले टाइम में there might be problems. So अगर हम एक preventive approach की बात करें, so किस तरह से एक, अगर आप if you have to give 5 tips to patients के वो एंटीबायोटिक लेने की स्थिति आए ही नहीं, स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस टू, स्पेशली जब हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात करें, उनको वो चीज से पहले ही वो किस तरह से स्मॉल चेंजेस कर सकते हैं टू come to a point where they do not need to take medicine, small changes in their daily routine, anything that can सबसे go पहला in. तो चेंज जो हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स एंटीबायोटिक्स का ऑलमोस्ट यूज एकदम ही कम हो गया था बिकॉज लोग मास्क लगाते थे. तो सबसे कॉमन इन्फेक्शन क्या होता है? सबसे कॉमन इन्फेक्शन तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है. तो अगर आप डस्ट में और घर में साफ सफाई रखें, अगर बाहर जाते हैं जहाँ डस्ट है तो वहाँ मास्क लगाएं, और आप जो भी खाते हैं उसको प्रॉपरली स्टेरलाइज करके खाएं. आपको गट इन्फेक्शन कम होगा, आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम होगा, आपको टॉन्सिलाइटिस कम होगा, बच्चों को जो एडिनोइड्स की प्रॉब्लम, टॉन्सिल की प्रॉब्लम है वो सब कम होगी. सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज द
बेस्ट थिंग। दूसरा, जो जो जिन चीजों के लिए वैक्सीनेशन हो सकता है, जिनके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो अपने बच्चों को उन हर चीज के लिए वैक्सीनेट करवा दें, बिकॉज प्रिवेंशन इज मच इजियर, चीपर, बेटर देन क्योर। क्योर इज विथ एंटीबायोटिक्स, बट प्रिवेंट तो आप वैक्सीन से कर सकते हैं। तो वैक्सीन लगवा दें, आप प्रिवेंट करें चीज़ों को। तीसरा, एज ए वी हैव ऑलरेडी रिपीटेड ऑल दोज थिंग्स, कि जब भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आप जल्दीबाजी में ना रहें। स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेकर के उसको किसी तरह से खत्म करने की जल्दी में नहीं रहे, उसको पूरी तरह से हील करने हैं। अगर 7 दिन का कोर्स, 7 दिन का कोर्स कंप्लीट करें। इनएडिक्वेट आधी आधी डोज ना लें, पूरा डोज लें, पूरे समय तक लें। और अगर आप ये सब 4-5 चीजें करेंगे तो I'm वेरी श्योर कि ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी नहीं। Right, तो doctor. ये छोटे मोटे Joining us today for this discussion. Thank you. So that तो is all जाने से for पहले today, मैं सिर्फ everyone. एक बात और Meanwhile, बोलना keep चाहता हूँ, मैं ईएनटी सर्जन। sure. Right, Dr. Vikas. So thanks for being there. And तो जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, और मैं स्लीप एपनिया, साइनस, स्नोरिंग इनमें स्पेशलाइज करता हूँ। तो काफी लोगों को जो बार बार इन्फेक्शन होते हैं, वो सही तरीके के कारण भी होते हैं। खराटे आते हैं, नींद डिस्टर्ब होती है, साइनस कंजेस्टेड होते हैं, उसके कारण वजन बढ़ता है, स्लीप एपनिया और बढ़ता है, तो उसको उसके कारण लोग फिर दवाइयां लेते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो आप अपने स्लीप की क्वालिटी को देख, तो नाक खुलवाएं। अगर आपको स्लीप एपने का इशू, तो उसके लिए जो भी आपके डॉक्टर ट्रीटमेंट बताते हैं, हम सर्जरी से उसका इलाज करते हैं, कुछ सीपैप से इलाज होता है, जो कुछ भी होता है। आप समस्या के बेसिक रूट कॉज तक जाएंगे, बिकॉज स्लीप, अच्छा सोना, अच्छी नींद इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड इफ डिस्टर्ब स्लीप, स्लीप एपनिया इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। आपको हार्ट डिजीज से लेकर स्ट्रोक से लेकर के रिकरेंट इन्फेक्शन से लेकर सब कुछ होते रहता है। सो ये एक चीज मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा एज ए ईएनटी सर्जन। तो Yes, thank you, Dr. Vikas, and I'm sure that there is a lot of information that will थैंक यू। be, very beneficial for our audience. And that is all for today. Thanks for joining us. Meanwhile, I would request all our audience to keep on following our social media for more update on health issues. Thank you.